Hello students, welcome to my channel. In this channel, I will teach the chemistry in simplest way. Today's our topic is trick to solve the solubility product question from chapter ionic equilibrium. Now let's start the session. तो first हम देखते हैं what is mean by solubility. Now first topic लेते हैं हम what is mean by solubility means number of moles of salt dissolved in a particular volume and solubility is denoted as S. S से हम solubility denoted करेंगे. Solubility is the number of moles of salt means N in particular volume means N by V. N का यूनिट क्या आ गया? मोल. वॉल्यूम का यूनिट आ गया लीटर और डीएम क्यूब. तो यूनिट ऑफ सोल्यूबिलिटी इज मोल पर लीटर और मोल पर डीएम क्यूब इज द यूनिट ऑफ सोल्यूबिलिटी. नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट्स. हाउ टू फाइंड आउट द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट्स. Suppose some powdered or sparingly soluble salt such as AgCl is dissolved in water and stirred vigorously. A small quantity of AgCl is dissolved in water to give a saturated solution and most of salt remains undissolved. Means solid AgCl is in contact with saturated solution. A salt of AgCl is a strong electrolyte, that is it's dissolved in. AgCl can be dissociates as when AgCl solid is dissolved in water, it can be form a Ag plus in aqueous plus Cl minus aqueous. Because solid AgCl is dissolved in water, water is surrounded to the Ag plus and Cl minus, hence I can write the aqueous. Now the equilibrium constant for this reaction K is equal to molar concentration of product divided by molar concentration of reactant, that is Ag plus aqueous into Cl minus divided by molar concentration of AgCl. But AgCl is undissolved solid. The concentration of undissolved solid AgCl is the constant, that is AgCl is undissolved solid is equal to constant K dash. Therefore K is equal to molar concentration of Ag plus Cl minus divided by K dash. तो इसे हम कैसे लिखेंगे? K into K dash is equal to molar concentration of Ag plus into Cl minus, and this K into K dash is equal to Ksp, and this Ksp is called as a solubility products, that is Ksp is equal to Ag plus into Cl minus. That is solubility product of sparingly soluble electrolyte is the product of ionic concentration in saturated solution is given at temperature. Now Ksp is depend on temperature, that is temperature increases solubility product is also increases. This is the important point, that is temperature increases solubility product is also increases. Next important point is saturated solution. For saturated solution Ksp is equal to molar concentration of their ionic compounds, means suppose AB is dissociates as A plus and B minus, that is Ksp is equal to molar concentration of A plus and molar concentration of B minus, ये equal होंगे Ksp for the saturated solution. Now next important point is for unsaturated solution, that is for unsaturated solution. तो unsaturated solution के लिए Ksp is greater than molar concentration of A plus and molar concentration of B minus, that is more solute can be dissolved for unsaturated solution. And next third important point is that for supersaturated solution, Ksp, the solubility product is less than molar concentration of A plus and molar concentration of B minus. This is the trick
and this is the important points in solubility products. That is, temperature increases, Ksp is also increases. For saturation, Ksp is equal to A molar concentration of A plus and molar concentration of B minus. These are the three conditions. Now next, how to find out the solubility products. Now ionization of compounds, हम एक compounds लेते AXBY. This AXBY can be ionized as XAY plus and YBX minus. This can be dissociates into XAY plus and YBX minus. Therefore solubility product is KSP. तो KSP is equal to क्या आ जाएगा? AY plus raised to X and BX minus raised to Y. That is, solubility product of a compound is defined as the product of equilibrium concentration in mole per dm cube of its constituent ions in the saturated solution at a given temperature with a concentration of each ion raised to its power of coefficient in balanced chemical reactions. Means ये product लेंगे हम दोनों का, ionic products of this concentration raised to the power of its stoichiometric coefficient in balanced chemical equation. Suppose for example लेते हम BaSO4. तो BaSO4 can dissociates as Ba2 plus SO4 2 minus. Therefore Ksp is equal to molar concentration of Ba2 plus and SO4 2 minus. Suppose Ay plus having solubility is X as mole per dm cube and Bx minus की solubility है Y as mole per dm cube. Then तो Ksp is equal to क्या आ जाएगा? Y plus की solubility क्या है? X as raised to X and By की solubility and Bx minus की solubility क्या है? Y as raised to Y. Therefore X raised to X, S raised to X, Y raised to Y and S raised to Y. Therefore X raised to X, Y raised to Y and S raised to X plus Y. From this equation we can easily find out the solubility products. For example लेते हम Ag. For example लेते AgI. It can be dissociates as Ag plus I minus. Here X and Y is the 1. X is equal to 1, also Y is equal to also 1. Therefore Ksp is equal to X raised to 1 raised to 1, 1 raised to 1 and S raised to 1 plus 1. That is S square. Ksp is equal to क्या आ गया? S square. अगर हमें Ksp दिया है, solubility फाइंड आउट करनी है, तो S is equal to क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ Ksp. Now I can give a simple trick to find out directly solubility products of a compounds. Now first trick है for AB type. Suppose the compound is of AB type. For example say AB type के AgCl, PbSO4 and BaSO4. ये AB type of compounds है. Solubility products का equation क्या है? Ksp is equal to S square. और हम इसे find out कर सकते हैं. That is AgCl can be dissociates as Ag plus and Cl minus. इसकी solubility as S and S. Therefore Ksp is equal to S into S, that is S square, or X is equal to 1, Y is equal to also 1. Therefore Ksp is equal to 1 raised to 1, 1 raised to 1 and S raised to 1 plus 1 means S square. That is same. ये टाइप से फाइंड आउट कर सकते और इन दिस टाइप. नाउ सेकेंड टाइप जो है हमारा, सेकेंड टाइप फॉर AB2 टाइप. अगर कंपाउंड्स है AB2 टाइप्स के, फॉर एग्जांपल AB2 और A2B टाइप्स, तो इसके लिए तो इसके एग्जांपल्स हैं. एग्जांपल्स लेंगे हम
PCl2, CaCl2 and Na2SO4. और वन मोर एग्जाम्पल ले लेते हैं, PbNO3 twice. These are the examples of A to B टाइप और AB2. तो इसके लिए हम KSP वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? KSP इज इक्वल टू 4S क्यूब. KSP इज इक्वल टू 4S क्यूब. तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, PbCl2 इट कैन बी डिसोशिएट्स एज Pb2 प्लस ट्वाइस Cl माइनस. इसकी सोल्यूबिलिटी आ गई S, इसकी सोल्यूबिलिटी आ गई 2S. देयरफॉर KSP इज इक्वल टू S into 2S raised to the power of its stoichiometric coefficient. 2 का स्क्वायर है 4, S स्क्वायर एंड S is the 4S क्यूब. दैट इज सेम. और इसे हम सेकेंड मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं. X is equal to 1 and Y is equal to 2. Therefore KSP is equal to 1 raised to 1, 2 raised to 2 and S raised to 1 plus 2. That is 4S क्यूब. दोनों मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते. ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड टाइप है. ट्रिक फॉर थर्ड टाइप. हमारा थर्ड टाइप है A3B. A3B और AB3 टाइप. A3B और AB3 टाइप है. इसके एग्जांपल्स हैं AlCl3 है, FeCl3 एंड Na3PO4. तो इसके लिए हम डायरेक्टली सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट्स का फॉर्मूला क्या लेंगे? 27S raised to 4. Now you can try by using this method. Now next type है, fourth type is the A3B2 और A2B3 टाइप. Now इसके एग्जांपल्स लेते हैं हम. Al2SO4 thrice एंड सेकेंड एग्जाम्पल है Ba3PO4 ट्वाइस. तो इसके लिए हम सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट KSP इज इक्वल टू 108S raised to 5. These are the 4 tricks to find out the solubility products. Now इसके बेसिस पे हम MCQ सॉल्व करते हैं. Now first MCQ है हमारा. Among the following hydroxide, the one which has lowest value of KSP at ordinary temperature about 25 degree Celsius. So now these are the alkaline earth hydroxides. Solubility increases on moving down the group. Solubility increase होगी on moving down the group. Solubility increases. Down the group solubility increases है, that is beryllium is the first elements in the group second and barium is the last element in the group second. तो barium hydroxide की solubility more होगी because top to bottom solubility increases and beryllium hydroxide having lowest solubility. Lowest solubility है तो solubility product भी उसका क्या होगा? Lowest होगा because beryllium is at the top of the group. That is option D is our right answer. Now next MCQ लेते हैं हम. Solubility product of sparingly soluble salt Ba2 is 4 into 10 raised to minus 12. The solubility of Ba2 is. हमें solubility product दिया है, KSP दिया है 4 into 10 raised to minus 12 and हमें find out करनी है solubility. The type of salt is Ba2. मैंने इसके लिए अभी एक ट्रिक बताई. Ba2 के लिए दिस ट्रिक इज द 4S क्यूब. तो इसके लिए हम इक्वेशन क्या यूज करेंगे? 4S क्यूब. दैट इज KSP फॉर Ba2 इज 4S क्यूब. हमें सोल्यूबिलिटी फाइंड आउट करनी. तो S इज इक्वल टू क्या आएगा? क्यूब रूट ऑफ KSP डिवाइडेड बाय 4. दैट इज KSP की वैल्यू दी है हमें 4 into 10 raised to minus 12 डिवाइडेड बाय 4. 4 गेट कैंसल. दैट इज 10 raised to minus 12 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा? 1 into 10 raised to minus 4. दैट इज ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर. नेक्स्ट MCQ है. सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ Ag2SO4 is 2.5 into 10 raised to minus 2
molar, the value of its solubility products. तो हमें solubility products means KSP find out करना है and solubility दी है उसकी 2.5 into 10 raised to minus 2 molar. Now this salt is again A2B type of salt and solubility products क्या लेते हैं 4S cube, that is 4 into solubility दी है 2.5 into 10 raised to minus 2 क्यूब, that is 4 into 2.5 का हम क्यूब करेंगे तो 2.5 का क्यूब आएगा 15.625 into 10 raised to minus 6, that is answer of this question is 15. तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5 4 जा 20, 5 2 जा 8, 10, 6 4 जा 24 plus 125, 5 4 जा 22 and 4 1 जा 4 2 6, that is 6 to 5, that is 62.5 into 10 raised to minus 6 is the solubility products. That is option A is our right answer. Next MCQ है the solubility of AgCl in 0.2 molar NaCl solution is. तो हमें solubility find out करनी है AgCl की in 0.2 molar NaCl solution में and KSP दिया है AgCl का 1.2 into 10 raised to minus 10. नाउ इसे हम सॉल्व करते, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में सोल्यूबिलिटी ऑफ AgCl को x ले लेते, दैट इज सोल्यूबिलिटी ऑफ AgCl इज x मोल पर dm क्यूब, मीन्स AgCl डिसोशिएट्स एज Ag प्लस प्लस Cl माइनस, दैट इज 0 0. ठीक है, आफ्टर बिफोर डिसोशिएशन x 0 0, दिस इज द बिफोर डिसोशिएशन and after dissociation it is x and x moles. Now when NaCl can be dissociates as Na plus plus Cl minus and Cl minus का concentration कितना दिया है 0.2. Cl minus का concentration in AgCl is x and NaCl का कितना है 0.2. Therefore total concentration of Cl minus is equal to x plus 0.2. Solubility product find out करने KSP for AgCl is equal to ionic products of their concentration. That is Ag plus का concentration कितना है x and Cl का concentration x plus 0.2. That is x square plus 0.2 x and KSP value for AgCl. AgCl के लिए हमें KSP value कितनी दी है 1.20 into 10 raised to minus 10. If x square is very less than 1, therefore KSP is equal to क्या आ जाएगा डायरेक्टली 1.20 into 10 raised to minus 10 is equal to near about 0.2 x. Therefore x is equal to क्या आ जाएगा 1.20 into 10 raised to minus 10 divided by 2, that is 6 into 10 raised to minus 10 molar is the solubility of AgCl. That is 6 into 10 raised to minus 10, means option A is our right answer. Next MCQ है solubility of salt A2B3 is 1 into 10 raised to minus 4 is. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है KSP फाइंड आउट करना है एंड दिस टाइप के लिए A2B3 टाइप के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, A2B3 टाइप के लिए KSP is equal to 108 s raised to 5, that is 108 s raised to 5, that is 108 into solubility दी है हमें 1 into 10 raised to minus 4, that is आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्टली 108 into 10 raised to minus raised to 5 raised to the power 5, 4 5 is 20, that is minus 20. ऑप्शन में 20 है लेकिन माइनस नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 डिजिट्स में पॉइंट दे देंगे, दैट इज 1.08 इंटू 10 रेज टू माइनस 18 कर लेते हैं, मीन्स ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर. नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल सल्फाइड हैज मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी इन वाटर. तो कौन से मेटल सल्फाइड की मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी है. तो हायर द KSP की वैल्यू अगर हायर है तो मोर सोल्यूबल
of that compound in water. More soluble of that compound in water means KSP value increases, solubility ऑप्शन में देखते कि कौन से कंपाउंड्स की, कौन से मेटल सल्फाइड्स की KSP वैल्यू मोर है. अगर KSP वैल्यू मोर होगी तो मोर सोल्यूबल इन वाटर. KSP वैल्यू 36 इंटू 10 टू द पावर -30, यहाँ पे 10 टू द पावर -54 है, -20 एंड -22. तो -10 टू द पावर 20 इज द हाइएस्ट वैल्यू मीन्स FeS की KSP वैल्यू हाइएस्ट है, सो इट इज मोर सोल्यूबल एंड हैविंग मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी इन वाटर. दैट इज ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट MCQ लेते हैं. What are the units in which solubility products of Ca3PO4 twice is expressed? तो हमें यूनिट ऑफ Ca3PO4 twice फाइंड आउट करना है. तो Ca3PO4 ट्वाइस को हम डिसोशिएट्स करेंगे, दैट इज थ्राइस Ca2 प्लस एंड ट्वाइस PO4 2 माइनस. इसकी सोल्यूबिलिटी आ जाएगी 3s, इसकी सोल्यूबिलिटी आ जाएगी 2s. देयरफॉर KSP इज इक्वल टू 3s रेज टू द पावर ऑफ इट्स कोएफिशिएंट 2s रेज टू द पावर ऑफ इट्स कोएफिशिएंट. दैट इज 3 का क्यूब आ जाएगा 27s रेज टू 3 एंड 4s स्क्वायर. दैट इज 27 4 is 108s रेज टू 5. नाउ मैंने एक ट्रिक दी थी A3B2 टाइप के लिए सोल्यूबिलिटी क्या है 108s रेज टू 5. नाउ यूनिट फाइंड आउट करना है तो सोल्यूबिलिटी का यूनिट क्या है मोल पर dm3. देयरफॉर KSP इज इक्वल टू s रेज टू 5 मीन्स मोल पर dm3 रेज टू 5. तो यूनिट क्या आ जाएगा इसका मोल रेज टू 5 एंड dm3 रेज टू -15. That is mole raised to 5 and dm3 raised to 15. That is option D is our right answer. In this way we can easily solve the MCQ on solubility products by using this simple trick. ये मैंने एक simple trick दी है for this type of solutions, that is AB type, AB2 type of solutions and solving MCQ on it. तो हमने ये MCQ solve किया. I hope you like this video. Then please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.